Hello students, today I bring for you new chapter Biotechnology and Its Application. In this chapter, we are going to solve a total of 33 questions which are coming in the previous 10-year exam of NEET. So, let's start the first question. Which of the following can act as molecular seizures? Option A restriction enzymes, option B DNA ligase, option C RNA polymerase, option D DNA polymerase. So here the answer is option A, restriction enzymes. Explanation: restriction enzymes, also known as restriction endonuclease, act as molecular seizures in molecular biology. They recognize specific DNA sequence in a molecule and then cut the DNA at these recognition sites. Different restriction enzymes recognize and cut at different DNA sequences. So A option is the answer. Second question matching. जीन थेरापी, आरएनए इंटरफेरेंस, एलिसा, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। और लिस्ट में दिया गया है सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट्स, सेकेंड डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर एड्स, थर्ड सेलुलर डिफेंस एंड फोर्थ अलाउस करेक्शन ऑफ ए जीन डिफेक्ट. सो फर्स्ट जीन थेरापी, इट कनेक्टेड टू ऑप्शन नंबर 4 allows correction of a gene defect. RNA interference, it connected to option number 3 cellular defense. ELISA is diagnostic test for AIDS, and gel electrophoresis is connected to option number 1 separation of DNA fragments. So 4, 3, 2, 1. Come to the options. Option number C is your answer. 4, 3, 2, 1. Next, question number 3. During the purification process for recombinant DNA technology, addition of chilled ethanol precipitates out DNA, option B histone, option C polysaccharides, and option D RNA. So here the answer will be DNA. Explanation: during isolation of the genetic material, purified DNA ultimately precipitate out after the addition of chilled ethanol. So option A is your answer. Question number 4. In gene gun method used to introduce alien DNA into host cells, microparticles of trace metals are utilized. So here, which type of particular microparticles are utilized? Zinc, tungsten or gold, silver, or option D copper? Here the answer will be option B, tungsten or gold. Because in gene gun method, microparticles of tungsten or gold are used. Gold or tungsten are inert in nature, so they do not alter the chemical composition of cell. That's why tungsten or gold are used. Next, question number 5. Main step in the formation of recombinant DNA are given below. तो यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट है और बाद में उनके ऑप्शंस होंगे. ठीक है, 4 स्टेटमेंट है. देखो, पहला regarding recombinant DNA, formation of recombinant DNA, insertion of recombinant DNA into the host cell. ये तो पूरा लास्ट स्टेप होगा. कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन बाय रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, बिल्कुल ये पहला स्टेप होगा आपका. ओके, सेकेंड स्टेप विल बी, ओके 4 स्टेटमेंट है तो ये पहला है और ए वाला स्टेटमेंट फोर्थ है, लास्ट स्टेटमेंट है. अब आते हैं सेकेंड थर्ड में. आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रैगमेंट और एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग पीसीआर. मिल गया आपको. ये आपका क्या होगा? सेकेंड होगा. दिस स्टेटमेंट इज द थर्ड वन एंड फोर्थ इज ऑप्शन ए. स्टेटमेंट ए इज द फोर्थ वन. तो अकॉर्डिंग टू दिस करेक्ट सीक्वेंस विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज बी सी डी ए. ओके, so this is the correct statement. Because recombinant DNA technology involves several steps in specific sequence such as isolation of DNA, fragmentation of DNA by restriction endonuclease, isolation of desired DNA fragment, ligation of the DNA fragment into a vector, transferring the recombinant DNA into the host, and culturing the host cell in a medium at large scale, and extraction of the desired product. तो यहाँ पर कुछ ही स्टेप दिया गया है और उनको हमने अरेंज कर लिया कुछ इस तरह से और हमारे पास आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी.
That is statement B, C, D and A. Next question number 6. Milk of transgenic cow Rosie was nutritionally more balanced product for human babies than natural cow milk because it contains option A human enzyme adenosine deaminase, option B human protein alpha 1 antitrypsin, option C human alpha lactalbumin, and option D human insulin like growth factor. So it contains option number C, that is human alpha lactalbumin. Option C is the correct answer. Question number 7. In the following palindromic base sequences of DNA, which one can be cut easily by particular restriction enzyme? See the options, and from the options the correct answer will be option number B, 5' GAATTC 3' and 3' CTT AAG 5'. It can be cut out easily by particular restriction enzyme. Question number 8. In gene therapy, adenosine deaminase ADA deficiency, the patient requires periodic infusion of genetically engineered lymphocytes because option A, retroviral vector is introduced into these lymphocytes, gene isolated from marrow cells producing ADA is introduced into the cells at embryonic stage, lymphocytes from patient's blood are growth in culture outside the body. Option D, genetically engineered lymphocytes are not immortal cells. So here the answer will be option number D, genetically engineered lymphocytes are not immortal cells. Okay, that's why these cells die after some time. Question number 9. Statement related to human insulin are given below. कुछ स्टेटमेंट दिया गया, देखो 5 स्टेटमेंट दिया गया, आपको प्रॉपर बतानी है इंसुलिन के बारे में, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन. सो हियर प्रो हार्मोन इंसुलिन कंटेन्स एक्स्ट्रा स्ट्रेच ऑफ सी पेप्टाइड. ओके, प्रो हार्मोन ऑफ इंसुलिन कंटेन्स एक्स्ट्रा स्ट्रेच ऑफ सी पेप्टाइड. करेक्ट है ये, तो ए स्टेटमेंट आपको करेक्ट है. बी की तरफ आते हैं. ए पेप्टाइड एंड बी पेप्टाइड चेन्स ऑफ इंसुलिन वर प्रोड्यूस्ड सेपरेटली इन E. coli, extracted and combined by creating disulfide bond between them. Okay, this one also correct. Third, insulin used for treating diabetes was extracted from cattle and pigs. This one is the wrong one. Fourth, pro-hormone insulin needed to be processed for converting into a mature and functional hormone. Correct one. Some patients develop allergic reactions to the foreign insulin. Wrong one. So A, B and D are the correct one. Come to the options. Option number A will be your answer. Explanation. The pro hormone also need to be processed before it becomes a fully mature and functional hormone, which contains an extra stretch called the C peptide. In 1983, Eli Lilly, an American company, prepared 2 DNA sequences corresponding to A and B chains of human insulin and introduced them in the plasmid of E. coli to produce insulin chains. So option A will be your answer. Question number 10. When gene targeting involving gene amplification is attempted in an individual's tissue to treat disease, it is known as. Gene targeting involving gene amplification is attempted in an individual's tissue to treat disease. That is called option number A, gene therapy. Okay. Question number 12. Adenosine deaminase deficiency result into. Adenosine deaminase ADA deficiency result into. Option A, Parkinson's disease. Option B, digestive disorder. Option C, Addison's disease. Option D, dysfunctions of immune system. So the answer will be option D, dysfunction of immune system. Okay. Question number 12. Which of the following statement is not correct? Incorrect बतानी है. देखो, the pro-insulin has an extra peptide called C peptide. Correct है ये. The function of insulin
A and B chain linked together by hydrogen bonds. ये गलत हो गया. Third, genetically engineered insulin is produced by in E. coli. Correct. In man, insulin synthesized as a pro-insulin. Correct. तो यहाँ पर क्या होगा? Not correct पूछा है तो wrong statement. B will be your answer. Explanation. The functional insulin molecule has two chains A and B that are linked together by disulfide bridges and not by hydrogen bond. क्या होता है इनके बीच में? डाइसल्फाइड ब्रिज होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता इनके पास. क्लियर? इसलिए बी स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13. मैचिंग को दिया गया है. देखो यहाँ पर 1 2 3 एक टेबल यहाँ पर है. पीसीआर बैचलर्स फॉर जेनेसिस. चलो बीटी कॉटन. बीटी कॉटन कहाँ जाएगा? वो जो ऑप्शन ऊपर रह गया बैचलर्स फॉर जेनेसिस में. एडिनोसिन डियामिनेज डेफिशिएंसी, एडीए डेफिशिएंसी किस में जाएगा? ये नेट गोज टू जीन थेरापी के थ्रू ठीक हो सकता है. आरएनएआई इट गोज टू सेलुलर डिफेंस एंड जो पीसीआर डिटेक्शन ऑफ एचआईवी इन्फेक्शन. थर्ड में तो इसको देखते हुए व्हाट विल बी योर आंसर? यानी योर आंसर विल बी बीटी कॉटन फोर्थ में गया तो 4 पहला. 4 1 2 3. कम टू द ऑप्शंस. देखो अभी 4 1 2 3 ऑप्शन डी विल बी योर आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14. BT cotton variety that was developed by the introduction of toxin gene of Bacillus thuringiensis is resistant to fungal disease, plant nematodes, insect predators and insect pests. So here the answer will be option D, insect pest. Okay. 15. The law and the rule to prevent unauthorized exploitation of bioresources are termed as. The law and the rule to prevent unauthorized exploitation of bioresources are termed as option A, bioethics. Okay, option A is your answer. 16. RNA interference is used for which of the following processes in the field of biotechnology? Option A, to develop a pest resistance plant against infestation by nematode. यही आपका करेक्ट आंसर हो गया. आरएनए का इस्तेमाल इसी में ही तो होता है. बी, टू एनहांस द मिनरल यूसेज बाय द प्लांट. गलत. टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस. रॉन्ग वन. टू डेवलप ए प्लांट टॉलरेंस टू एबायोटिक स्ट्रेसेस. रॉन्ग वन. सो योर आंसर विल बी ऑप्शन ए. 17. Which of the following is true for golden rice? Golden rice, it is a vitamin A enriched with a gene from daffodil. B, it is a pest resistance with a gene from Bacillus thuringiensis. C, it is a drought tolerant developed using agrobacterium vector. And D, it has yellow green because of gene introduced from a primitive variety of rice. So the answer will be option A. Golden rice, it is a vitamin A enriched with a gene from daffodil and also it rich in keratin. A option is the correct one. 18. Which of the following is commonly used as a vector for introducing a DNA fragment in human lymphocytes? Commonly used vector, and that will be option A, retrovirus. Okay, retrovirus is commonly used as a vector for introducing a DNA fragment in human lymphocytes. Now question number 19. In India, the organization responsible for assessing the safety of introducing genetically modified organisms for public use is ICMR, CSIR, RCGM or GEAC. So in India, which organization is responsible? Option number D, GEAC, Genetic Engineering Approval Committee. Question number 20. A new variety of rice was patented by a foreign company. Through such varieties have been present in India for a long time. This is related to
What type of species? Now that will be option D, basmati. Okay, 21. Use of bioresources by multinational companies and organizations without authorization from the concerned country and its people is called. Simple answer, option B, biopiracy. Okay, biopiracy, option B. 22. Which technique help to identify a bacterial or viral pathogen in a human body even when its concentration is very low and clinical symptoms are not yet visible? What type of technique is mostly useful or helps to identify bacterial or viral pathogens in human body? So the answer will be option D, PCR. Okay, PCR is the answer. Polymerase chain reaction. 23rd. In gene therapy to treatment adenosine deaminase deficiency disorder, which the patient's blood are used? Thrombocytes, erythrocytes, lymphocytes, both erythrocytes and lymphocytes. So the answer will be option C, lymphocytes only. Question number 24. What is the meaning of BT in BT cotton? BT का मतलब क्या होता है? Bacillus thuringiensis. तो देखो ऑप्शन है कॉटन सीड्स कैरिंग एन एंडोटॉक्सिन जीन फ्रॉम बैसिलस thuringiensis अगेंस्ट पिंक बॉलवॉर्म. पहला ही आंसर आपका करेक्ट हो गया. बैकुलोवायरस ट्रीटेड कॉटन सीड्स अगेंस्ट पिंक बॉलवॉर्म, गलत. बिगर थ्रेड ऑफ डिजीज रेजिस्टेंस कॉटन विद बेटर टेंसिल स्ट्रेंथ, रॉन्ग वन. आंसर ए ही होगा. फोर्थ ऑप्शन देख लेते हैं. कॉटन प्रोड्यूस्ड बाय बायोटेक्नोलॉजी यूजिंग रेस्टिंग एंजाइम एंड लाइगेज टू रेजिस्ट, गलत. ए ऑप्शन आप करेक्ट. 25. What kind of therapy was given in 1990 to a 4-year-old girl with ADA deficiency? ऑप्शन ए इम्यूनोथेरेपी, ऑप्शन बी रेडिएशन थेरेपी, ऑप्शन सी जीन थेरेपी, ऑप्शन डी केमोथेरेपी. So for the first time here option C, gene therapy, is introduced in a human body. Okay, so option C is the answer. Next, 26. Which part of the tobacco plant is infected by Melodogyne incognita? Flower, leaf, stem, root. Option number, which one is the answer? Option D, root is the answer. Well, Melodogyne incognita is also known as southern root knot nematode. It's a type of nematode that infect the roots of tobacco plant. So D option is the correct answer. 27. The two polypeptides of human insulin are linked together by. Two polypeptides of human insulin are linked together by hydrogen bond, phosphodiester bond, covalent bond, disulfide bridges. So here the answer will be option D, disulfide bridges. Explanation: the two polypeptide chains of human insulin, the A chain and the B chain, are linked together by two interchain disulfide bonds and one intrachain disulfide bond. तो दोनों तरफ डाइसल्फाइड बॉन्ड होंगे तो उसको हमने नाम दे दिया डाइसल्फाइड ब्रिजेस. 28. In BT cotton, the BT toxin present in plant tissue as protoxin is converted into active toxin due to. Option A, action of gut microorganism. Option B, presence of conversion factor in insect gut. Option C, alkaline pH of the insect gut, and option D, acidic pH of the insect gut. So the answer is option C, alkaline pH of the insect gut. Okay. 29. Golden rice is a genetically modified crop plant where the incorporated gene is meant for biosynthesis of vitamin C, omega 3, vitamin A, vitamin B. So here the answer will be option number C, vitamin A. Okay. Next, question number 30. ADA is an enzyme which is deficient in a genetic disorder SCID. What is the full form of ADA? बहुत बार ऊपर क्वेश्चन में पूछा गया है. ADA का फुल फॉर्म क्या है? एडेनोसिन डीएमिनेज, ऑप्शन बी. ओके, बी इज योर आंसर, एडेनोसिन डीएमिनेज.
अब स्कीड क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय स्कीड? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ स्कीड? नाउ फुल फॉर्म ऑफ स्कीड इज सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी, SCID, सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी। क्वेश्चन नंबर 31, in vitro clonal propagation in plant is characterized by, in vitro clonal propagation in plants is characterized by, option A microscopy, option PCR and RAPD, option C northern plotting, option D electrophoresis and HPLC. So here the answer will be option B, PCR and RAPD. PCR का पता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, एंड RAPD का फुल फॉर्म क्या है? रैंडमली एम्पलीफाइड पॉलीमॉर्फिक DNA, RAPD, रैंडमली एम्पलीफाइड पॉलीमॉर्फिक DNA. Next question, question number 32. The first human hormone produced by recombinant DNA technology is progesterone, insulin, estrogen, thyroxine. Answer will be option B, insulin. Okay. Last and final question of this chapter. Which of the following BT crop is being grown in India by farmers? Soybean, maize, cotton, brinjal. Well, farmers की बात हो रही तो फार्मर आजकल सारे सोयाबीन भी बीटी लगा रहे हैं, मेज भी बीटी लगा रहे हैं, कॉटन भी है, ब्रिंजल भी है, लेकिन मोस्टली ज़्यादातर अभी 2013 का सवाल है तो उस टाइम एनसीईआरटी के हिसाब से क्या था आपका आंसर? योर आंसर विल बी ऑप्शन सी, कॉटन. ओके, कॉटन था आपका आंसर. सो हम यहाँ पर कॉटन को ही क्लिक करेंगे और इसके साथ 33 क्वेश्चन हमने इस चैप्टर के सॉल्व किया है. आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल करेगा नीट की एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए. और वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब करिए मेरे इस चैनल को ताकि आपके पास न्यू वीडियो, लेटेस्ट वीडियो आपके पास आ सके. मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशंस, जो नेक्स्ट चैप्टर है और जिसमें हम करने वाले हैं टोटल 35 क्वेश्चंस. सो वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू. जय जगन्नाथ.